questions. 1. What kind of surface do you need for making a rangoli? Answer. We need a plain surface for making a rangoli. 2. How do you start making a rangoli? Answer. We start making a rangoli with dots. 3. What did you do in order to complete the rangoli? Answer. We joined dots with lines to complete the rangoli. 4. इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपने देखा कि रंगोली को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक प्लेन पेपर लेंगे और उस पर डॉट्स बनाएंगे, फिर अपना मनचाहा आकार उसमें उकेरेंगे और उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल फिगर, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, उसकी मदद से हम बनाएंगे। पूरा वीडियो इंग्लिश में है, देखने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में आपको हम सजेशन देते रहेंगे। पेन, कॉपी, पेन लेके क्वेश्चंस कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको देखिए और लोगों को बताइए। Name the different shapes you see in the rangoli. Answer. We can see shapes like a lion, triangle, square, and rectangle. 5. Would it be possible to make a rangoli on a scooter or on an elephant's back? Answer. It is not possible to make a rangoli on a scooter or on an elephant's back. 6. When making a rangoli on paper, what do you use to make the dots? Answer. When making a rangoli on paper, we use pen or pencil to make the dots. Let's learn. Points. A point is shown by a tiny dot. We can use a pen or a sharp pencil to make the dot. The dots in the rangoli are the symbols for points. A point can be given. पॉइंट क्या होता है? जो बताया गया, पॉइंट कोई भी एक ऐसा डॉट जो पेन या शार्प पेंसिल से खींचा जाता है, उसको हम पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P है, A है, T है, यहाँ पे दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स को जब आपस में आप मिला देंगे तो वो लाइन बन जाएगा और एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। A name. Capital letters of the alphabet are used to name a point. The points P. पॉइंट को बताने के लिए कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट को P से दिखाया गया है, एक को A से दिखाया गया है, एक को T से दिखाया गया है। ये पॉइंट के नाम है। आप चाहें तो अपने मन से इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से है। A and T are shown in the figure. Line segments and lines. Take 2 points A and B on a sheet of paper and join them using a ruler. We get the straight line AB. Can we extend this line further on the side of point B? On the side of point A, how far can we extend it? We can extend the line in both directions till the edges of the paper. If the paper is very big, the line can be very long too. How long would the line be on a playing field? Let's imagine that we can extend this line forever without any limits on both sides. To show this extended line on paper, we used arrowheads at both ends of the line. In mathematics, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब A और B 2 पॉइंट हैं और उनके बीच को हम मिला देंगे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और जब A और B को चीरती हुई वो चीजें आगे चली जाएंगी, जो तीर बता रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसको हम लाइंस कहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन? तो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट करते हैं। और लाइंस क्या होता है? जब 2 पॉइंट से होती हुई कोई चीज चली जाए और इनफाइनाइट तक, उसकी लंबाई मतलब हम नहीं निकाल सके, वो कितना भी लंबा हो सकता है, उसको हम लाइन कहेंगे। तो लाइन जो होता है, लाइन के टुकड़े को ही, लाइन के सेगमेंट को ही, टुकड़े को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक। mathematics, when we say line, we mean straight line. The first line that we drew was only from point A to point B. It was a piece or a segment of the longer line. A line segment has 2 points showing its limits. They are called endpoints. We write line segment AB as segment AB in short. A and B are its endpoints. A line is named using a small letter or by using any 2 points on the line. Line L has been shown alongside. Its name can also be written as line PQ or line QP. आपने पिछले अभी देखा
कि एल दिया हुआ था, एल लाइन था जिसको हम पी क्यू से दिखा सकते हैं, तो स्मॉल लेटर से भी दिखा सकते हैं, तो लाइन का नाम हो जाएगा। कैपिटल लेटर दिखाएंगे तो लाइन का नाम पी और क्यू हो जाएगा। पी और क्यू जो है वो इंच पॉइंट है। तो मैम आपको यहाँ पे एक ही चीज बता रही है, उनको ध्यान से देखिए, इंग्लिश में है, समझने की कोशिश कीजिए और मन लगा के इसको समझने का प्रयास कीजिए। Rays. Look at the pictures. What do you see? Rays starting from the sun go forward in all directions. Light rays from the torch also start from a point and go forward continuously in one direction. A ray is a part of a line. It starts at one end and goes forward continuously in the same direction. The starting point of a ray is called its origin. Here, P is the origin. An arrowhead is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. The figure can be read as ray PQ. रे क्या होता है? जो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ तक जाएगा उसको हम रे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी जो इन पॉइंट है, क्यू इन पॉइंट नहीं है। क्यू से जो तीर लगा हुआ एरो है वो बता रहा है कि वो लाइन बहुत दूर तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी हमें मालूम नहीं। तो जब इस तरीके से केवल एक हो इन पॉइंट, उसको हम रे कहते हैं। रे में केवल एक इन पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट में 2 इन पॉइंट होते हैं और लाइन में एक भी इन पॉइंट नहीं होते हैं। इसको नोट कर लें आप लोग। The ray PQ is not read as ray QP. Students, let's do something. Try this. Activity 1. Draw a point on the blackboard. Every student now draws a line that passes through that point. How many such lines can be drawn? Activity 2. Draw a point on a paper and use your ruler to draw lines that pass through it. How many such lines can you draw? An infinite number of lines can be drawn through one point. When two or more lines pass through the same point, they are called concurrent lines, and the common point through which they pass is called their point of concurrence. In the figure alongside, which is the point of concurrence? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? जब एक पॉइंट से बहुत ढेर सारी लाइन जाएंगी या लाइन सेगमेंट जाएंगे तो उसको हम कॉन्करेंट लाइन से लाइन सेगमेंट कहेंगे। एक पॉइंट से कुल कितने लाइन जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, ये आपका कॉन्करेंट लाइन हो गया। आगे देखते चलिए। P is the point of concurrence. Can you tell? There are 9 points in this figure. Name them. If you choose any 2 points, how many lines can pass through the pair? One and only one line can be drawn through any 2 distinct points. Which 3 or more of these 9 points lie on a straight line? 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear points. Of these 9 points, name any 3 or more points which do not lie on the same line. कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो, उनको कोलिनियर। को का मतलब होता है साथ, लीनियर का मतलब लाइन में। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। Points which do not lie on the same line are called non-collinear points. Students, let's learn something. We will see what is the plane. Planes. Look at the pictures. What kind of surfaces do you see? The surfaces in the first 2 pictures are flat. Each flat surface is a part of an infinite surface. In mathematics, a flat surface is called a plane. The name of the plane in the picture is H. Even though we draw a suitably small figure of the plane, it actually extends infinitely on all sides. Arrows are drawn to show that the plane extends infinitely in all directions. However, these arrows are often omitted for the sake of convenience. Parallel lines. Look at this page from a notebook. Is this page a part of a plane? If we extend the lines that run sideways on the page, will they meet each other somewhere? Answer. This page is a part of a plane. If we extend the lines that run sideways on the page, they will not meet each other at any point. यहाँ पे आपको एक पेज दिखाया गया था। पेज का जो आखिरी छोर है उससे अगर हम लाइन खींचेंगे तो कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, वो दोनों लाइन आपस में कभी मिलते नहीं, उनके कभी आपस में मुलाकात नहीं होती। तो ऐसे 2 लाइन जो कभी भी आपस में मुलाकात न करें, मिले न, एक दूसरे को काटे न, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं।
Now I know. Lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. Now, students, think and solve the questions below. Write the proper term intersecting lines or parallel lines in each of the empty boxes. Intersecting lines, parallel lines, intersecting lines. Dear friends, do you know, we use maths in our daily life. Let's see how is it. My friend, maths, on the ground, in the sky. Observe the picture of the game being played. Identify the collinear players, non-collinear players, parallel lines and the plane. In January, we can see the constellation of Orion in the eastern sky after 7 in the evening. Then, constellation मतलब होता है तारों का समूह. It moves up slowly in the sky. Can you see the 3 collinear stars in the constellation? Do you also see a bright star on the same line some distance away? Students, let's solve the practice set 1. 1. Look at the figure alongside and name the following. Answer. 1. Collinear points. Points M, O, T and points R, O, N. 2. Rays. Ray O-N, Ray O-P, Ray O-S, Ray O-T, Ray O-R, Ray O-M. 3. Line segments. Segment MT, segment RN, segment OP, segment ON, segment OT. 4. Lines. Line MT and line RN. Students, let's solve the second question of practice set 1. 2. Write the different names of the line. Answer. Line L, line AB, line AC, line AD, line BC, line BD, line BC. Students, let's solve the third question of practice set 1. 3. Match the following. Group A, 1. Diagram. Group B, A, ray. Group A, 2. Diagram. Group B, B, plane. Group A, 3. Diagram. Group B, C, line. Group A, 4. Diagram. Group B, D, line segment. Answer. Group A, 1. Group B, C, line. Group A, 2. Group B, D, line segment. Group A, 3. Group B, B, plane. Group A, 4. Group B, A, ray. Students, let's solve the fourth question of practice set 1. 4. Observe the figure below. Name the parallel lines, the concurrent lines and the points of concurrence in the figure. Answer. Parallel lines. Line B is parallel to line M, which is parallel to line Q, and line A is parallel to line B. Concurrent lines. Line A, line B, line C, line M, and line P. Line Q, line M. Points of concurrence. Point A, point G. ICT tools or links. Use the tools of the GeoGebra software to draw various points, lines, and rays. See for yourself what a never-ending line is like. So, dear friends, let's see how the maths is fun. Maths is fun. Take a flat piece of thermocol or cardboard, a needle and thread. Tie a big knot or button or bead at one end of the thread. Thread the needle with the other end. Pass the needle up through any convenient point P. Pull the thread up, leaving the knot or the button below. Remove the needle and put it aside. Now,
Hold the free end of the thread and gently pull it straight. Which figure do you see? Now, holding the thread straight, turn it in different directions